beacon of bombs near Red Fort. Well, I'm deeply shaken by the terror occurred in New Delhi. India will not tolerate terrorism. Everyone involved in this will pay for this. What is government doing to compensate the victims? Well, the family members of the victims will be soon compensated. But the compensation will not be fulfilled until the guilty are punished. Thank you. Sir. Nation fast answers, sir. For more information, keep watching KB News. Thank you. बच्चे लोग प्लीज May I have your attention? The Speaker of the Parliament is now presiding. Honorable members, today on National Constitution Day, we honor the adoption of our Constitution and its guiding values. Through this Youth Parliament, we, the young citizens of India, commit to understanding the democratic processes and upholding the ideals of liberty, justice, equality, and fraternity. A very good morning to all of you. I welcome you all to this winter session of 36th Youth Parliament, and I am sure that this session will be fruitful. We begin today's session with oath or affirmation of the newly elected members. Secretary General, please. Oath of affirmation. Ms. Meenakshi Sahu, who is stand elected from Korba constituency of Chhattisgarh, will now take the oath or affirmation. Ms. Meenakshi Sahu, please. Madam, would you like to take the oath or affirmation? Affirmation, please. In which language would you like to take the affirmation? Hindi. मैं यह सत्यापित करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखूंगी और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से पालन करूंगी। नहीं जीतेंगे कुछ सीखेंगे तो लास्ट में। Ms. Himani Kanwar, who is stand elected from Choru constituency of Rajasthan, will now take the oath or an affirmation. Ms. Himani Kanwar, please. हम लोग तो बच्चे देखने में सीधे लगते हैं छत्तीसगढ़ बहुत सीधे हैं। Madam, would you like to take an oath or affirmation? An oath, please. In which language would you like to take the oath? In Sanskrit. अहम हिमानी कन्वर युवा संसदस्य राजस्थान प्रदेश चूरू लोकसभा क्षेत्रात् लोकसभा सदस्य रूपेण निर्वाचिता अस्मि। ईश्वरस्य शपथ ग्रह्णामि यत् अहं विधिना स्थापिता भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां निष्ठां धरिष्यामि, देशे प्रभु सत्तैव एकता आचरिष्यामि, तथा यत् अहं पदं स्वीकरोमि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि।
Honorable members, it is my sad duty to inform this House of the heartfelt incident happened today. 9 of our beloved citizens lost their life in a terrorist attack. In the recognition of our beloved citizens, I now invite the Honorable Prime Minister to share his condolences with the House. Today will be noted down as a black day in Indian history. Those responsible for this attack will face consequences and will be brought down to justice. The new India will not stay silent. Operation Sindoor is still on. As for the victims who lost their life to this cruelty, I, on behalf of the nation and the government, extend a heartfelt condolences to their family and their loved ones. May their soul attain eternal peace. Om Shanti. Honorable Speaker, it is with a heavy heart that I rise to express profound sorrow at the tragic loss of life in the appalling explosion near Red Fort. Our nation stands united in grief with the families of innocent civilians who perished and many who are injured in this heinous act. On behalf of the opposition, I express our deepest condolences to the bereaved families and wish a speedy and full recovery to the injured. We deeply mourn the loss of our citizens, and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti Shanti Shanti. The House may settle down. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved families. Yes, madam. Prime Minister to introduce new ministers. Madam, it's my pleasure introducing you, through you, my colleagues and the House, the new minister, Srimati Unnati Srivas, the Minister of State, Ministry of Development in Northeastern region. Now, the question hour starts. Question number 101, Mr. Harshit, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो केवल सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्र चरित्र और संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। महिलाओं की सुरक्षा। Despite having multiple laws from the Nirmaya Act to the workplace harassing policies, the ground reality is still harsh and disturbing. महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक और अब सबसे खतरनाक साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं सरकार से कुछ सीधा और स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। Is the government ensuring proper enforcement of the existing laws or just gathering dust in the files? न्याय मिलने में 10 साल लग जाते हैं और दोषियों को सजा की दर इतनी कम क्यों है? In the digital age, where online abuse, stalking and deep fakes are rising, what cyber security measures are implemented for women? महोदया, अगर एक महिला अपने शहर, ऑफिस या मोबाइल स्क्रीन से उसे डर लगता है, तो ये नाकामी केवल कानून का ही नहीं, बल्कि सरकार और समाज की भी है। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कानून नहीं बल्कि उसका सख्ती से पालन चाहिए। हमें कानून नहीं बल्कि उसका सख्ती से पालन चाहिए। महिलाओं केवल नारी नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी चाहती है। Honorable Minister of Women and Child Development, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय को सदन में उठाया। सरकार महिला सुरक्षा को केवल कानून का विषय नहीं, राष्ट्र प्राथमिकता मानती है। हम कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। कानूनी सख्ती, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पॉक्सो कानून और दुष्कर्म मामलों में सख्त से सख्त सजा, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश भर में 700 से अधिक वन स्टॉप सेंटर्स, साथ ही निर्भया फंड के माध्यम से सीसीटीवी, पैनिक बटन, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग्स और महिला तात्कालीन हेल्पलाइन नंबर 181 और 1090 तेजी से बढ़ाए गए हैं। कानून डिजिटल इंडिया, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना,
फेक प्रोफाइल्स और ऑनलाइन उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई। इसके अलावा हम जागरूकता एवं प्रशिक्षण पर भी ध्यान दे रहे हैं। स्कूलों व कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान मानसिकता पर भी बदलाव ला रहे हैं। हम मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि समाज के सहयोग से सुनिश्चित होती है। Members to ask supplementary question, please. Yes, Mr. Aditya Rajput. मंत्री महोदय, आपके प्रयास सराहनीय है, परंतु जमीनी हकीकत अभी भी चिंताजनक है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है और पुलिस में केस दर्ज कराने में मुश्किलें आती है। कई बार तो पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। आज भी कई महिलाएं एफआईआर दर्ज कराने से डरती है या उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती। ऐसे स्थिति में सरकार महिला शिकायतों के प्रति पुलिस की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित कर रही है? Honorable Minister, please. माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न महत्वपूर्ण है। सरकार सभी जिलों में महिला डेस्क की स्थापना सुनिश्चित कर रही है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटाइजेशन की नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrimegovernment.in की स्थापना की गई है, जहां महिलाएं अपनी ऑनलाइन उत्पीड़न की समस्याएं दर्ज करवा सकती हैं। सुरक्षित शहर योजना, महिला बीट पुलिसिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। No more supplementary, please. Question number 1, not 2. Mr. Asim, please. Speaker Madam, my question is directed to the Minister of Environment, Forest and Climate Change. Will the Honorable Minister state what steps the government has taken to promote environmental sustainability and involve youth in tackling climate change? Minister of Environment, please. Honorable Speaker Madam, the government unmistakably recognizes the indispensable role of our nation's youth in confronting the colossal challenge of climate change. In this regard, several visionary initiatives have been instituted, notably National Green Corps and Mission Life, that is Lifestyle for Environment. These programs are not mere administrative undertaking. These are comprehensive efforts to cultivate the environmentally responsible habit among students. Through these endeavors, we encourage young citizens to conserve water, curtail the reckless use of plastic, and participate enthusiastically in tree planting activities. Moreover, climate awareness programs across schools and colleges are equipping students with essential knowledge of recycling, renewable energy, and sustainable mode of living. In essence, we are nurturing a generation that is not only informed but profoundly empowered to safeguard the planet. Any supplementary question? Yes, Mr. Rudra. Speaker Madam, what steps have the government taken to reduce carbon emission at community level and how can students contribute to this effort? Minister of Environment, please. Speaker Madam, the government has launched a spectrum of ambitious and citizen-centric missions, such as Clean India Mission, National Solar Mission, and One Student, One Tree campaign. These initiatives embody a simple yet powerful principle. Environmental responsibility is not the responsibility of the government alone, but it is a shared national duty. Students, with their remarkable dynamism and persuasive zeal, can play an extraordinary role in this collective endeavor. By advocating clean energy use, participating in plantation drive, practicing waste reduction, and campaigning climate-friendly lifestyles in their communities, they become catalysts of a transformative change. Lastly, as I have always said, a country that instills ecological consciousness in its youth, a country that instills ecological consciousness in its youth is a nation that lays a very foundation of resilient and sustainable civilization. Thank you, Honorable Minister. The House appreciates the valuable contribution of young citizens towards environmental protection. Now, question number 103, Ms. Icha, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न सीमा सुरक्षा को लेकर है।
सीमा सुरक्षा भारत के लिए एक मुद्दा ही नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा का एक मूलाधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सीमाओं पर लगातार घुसपैठ, ड्रोन हमले, तस्करी और सीमा पार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चाहे वह पाकिस्तान की तरफ से हो या चीन की तरफ से, हमारी सीमाएं लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सीमा चौकियों पर पर्याप्त सैनिक तैनात है? क्या सीमावर्ती गांवों को विकसित और सुरक्षित करने के लिए कुछ किया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार सीमा पार हो रही डिजिटल और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए क्या कर रही है? Honorable Minister of Defense, please. अध्यक्ष महोदया, हमारी देश की सरकार इस विषय को पूरी गंभीरता से ले रही है। हम सब यह जानते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा केवल सैनिकों का ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख कदम, सीमा सड़क परियोजनाएं तेजी से पूरी की जा रही है। ड्रोन निगरानी, नाइट विजन डिवाइसेस और थर्मल कैमरे सीमाओं पर तैनात हैं। 1 रैंक 1 पेंशन और जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अध्यक्ष महोदया, हमारे देश की सरकार सीमाओं की सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगी। Any supplementary question? Yes, Mr. Abhishek. माननीय अध्यक्ष, सरकार की योजनाएं सराहनीय हैं, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं। कई सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जवानों को कई बार पुराने हथियार और खराब उपकरण मिलते हैं और हाल ही में ड्रोन द्वारा नशीले पदार्थ और हथियार गिराए गए, जो कि चिंता का विषय है। माननीय सदस्य, आप सीधे प्रश्न पूछिए। जी महोदया, क्या सरकार सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय नीति लेने पर विचार कर रही है? महोदया, Mr. Aditya, don't interrupt the session. You will get the chance at your particular time. Just take your seat. जी महोदया। Honorable Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत कार्यरत है। बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना के बीच सीधा तकनीकी समन्वय बढ़ाया जा रहा है। सीमाओं पर त्रिस्तरीय सिक्योरिटी मॉडल लागू किए गए हैं। जल्दी हम संसद में एक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा नीति लेकर भी प्रस्तुत हो रहे हैं। डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिसे अब सीमाओं पर तैनात किया जा रहा है। Any supplementary question? Yes, Mr. Aditya Raj. Honorable Speaker, Madam, it is deeply disturbing that a blast has occurred at one of our most iconic symbol of freedom, the Red Fort. This is not merely an attack on the monument, but on the soul of our nation. Despite repeated warnings from the intelligence agencies, such incidents continue to occur. We demand to know from Honorable Defense Minister, how did this breach happen? What measures were to protect such a sensitive site? Is the government not accountable for this lapse in the national security? Honorable Minister, please. Honorable Speaker, Madam, this cowardly attack, it's not just an attack to a particular state, but it's an attack to a whole nation. Our agencies acted immediately. The area is sealed and NIA as well as Delhi Police is still investigating. Early report shows it's a link across the border. Let me say this clearly. India will not stay silent. India will not stay silent. Those behind this attack will be definitely hunted down and punished. We are tightening intelligence, strengthening every defense line. No enemy can break India's spirit. Our response will be strong and certain. Any other supplementaries on it? Yes, Ms. Anshika. Red Fort is witnessed, yet you still deny. How many? I ask, how many more blasts before you ask why? You call it security, we call it a joke. The nation is burning while you watch the smoke, Ms. Anshika, please come to the point. Yes, madam. Mr. Assurances are not enough. The
Honorable Speaker Madam, the opposition must remember that security is a national issue, not just a political one. I had taken prompt actions, and it is not doubt that our forces are fully capable of handling any of the threats. This is the time for unity, not for blame. Members, please, order in the House. This matter is of national importance. I direct that a detailed report on this incident and the security review be tabled before the House within 1 week. No more supplementaries now. Question number 1.4, Ms. Pratibha, please. Thank you, Honorable Speaker, Madam. The government has promised us a Viksit Bharat, a developed India by 2047. But I rise today to ask, is it truly achievable or is it just another political slogan? Let me present the 5 key concerns. Unemployment. According to recent CMIE data, youth unemployment remains over 15%. Even as a lack of graduates still remains jobless. Where is the ecosystem to create high quality sustainable employment? Education and healthcare. The government schools in rural areas still lack toilet, labs and trained teachers. Government hospitals face doctor shortages, lack of medicine and poor infrastructure. How can we talk of a Viksit Bharat when basic human development still indeed lag behind? Income inequality. The richest 10% own more than 70% of India's wealth. Welfare schemes are failing to lift people permanently out of poverty. Environment. The race for development is costing India's environment. Forest clearance. Polluted rivers and air quality index all worsen. Honorable Minister, the intent may be noble, but intent without the ground action is insufficient. India deserves a real change, not just a vision document. Thank you. Honorable Minister of Development and Planning, please. Honorable Speaker, I thank the Honorable Member for raising an important issue. But let me respond with facts, progress and future-ready planning. Employment generation under Startup India and Skill India. Over 1.2 crore youths have been upskilled. Also, the PM Vishwakarma scheme support poor artisans and local entrepreneurs. Human development. PM Shri schools are being established as a model institution across the country. Also, the Ayushman Bharat has provided free healthcare facilities to over 6 crore citizens. Inclusive growth. Direct benefit transfer have eliminated leakages and benefited millions. Schemes like PM Awas Yojana, Ujjwala and Jan Dhan have empowered the poor children and women. At last, green growth. We are moving toward net zero carbon emission by 2070. Honorable Speaker, Viksit Bharat is not just a slogan. It is a mission backed by measurable goals, people's participation and intergenerational responsibility. The road may be long, but we have taken decisive steps. Members to ask supplementary question, please. Yes, Ms. Namya. Madam, intentions must be match implementations. A handful of a scheme do not equal participation. If we truly aim for a Viksit Bharat, we must ask, are the poor participating in the economy or only receiving the benefits? Are our institutions strong enough to ensure justice, equity and dignity? Let us not confuse growth with development and targets with transformations. Honorable Minister, please. I can understand your concern, Minister, but let us not doubt the potential of our youth, our democracy and our vision. From new infrastructure to digital innovation, from women-led growth to climate action. This is India's time. Viksit Bharat 2047 is not just a dream. It is our collective responsibility. No more supplementary, please. Members must be aware of time limit of question hour. Now the question hour is over and we take up the next item.
Honorable members, we will now begin 0 hour. Members may raise urgent public issues of importance. The first 0 hour submission is by the Honorable Member from the opposition. Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise to draw the urgent attention of the House to the serious gaps in the implementation of educational reform in our country. While the government has launched the National Education Policy 2020, its execution on ground is facing multiple challenges. Teacher shortages continue in rural and tribal areas. With over 1 lakh, I repeat, over 1 lakh vacancies are still unfilled. As per ASER report 2023, only 43% of class 5 students can read the basic class 2 level text. This indicates a serious learning crisis. The digital inequality has widened. While the urban students have the access to tablets and Wi-Fi, the lakhs of rural students still study without electricity or internet. These are not just numbers, they represent millions of children being left behind. I ask the Honorable Minister of Education and Government to fill the vacant teaching posts as priority basis. Ensure equal access to digital tools and resources. Increase investment in government schools. Education is not a luxury, it is the foundation of India's future. The matter needs serious and urgent intervention. Thank you. Minister of Education, please. Honorable Speaker, Madam, in the case of teacher vacancies, yes, we acknowledge that teacher shortage is a pressing challenge. Regarding this, I would like to tell the House that through KVS Recruitment 2025 notification, 9,000 honorable members, 9,126 vacancies will be filled for various teaching and non-teaching posts. Also, under Samagra Shiksha 2.0 scheme, financial support is being provided for the hiring of additional teachers and subject experts. माननीय सदस्य, आप जो लर्निंग क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमने साल 2026-27 तक कक्षा 1 से 3 के सभी बच्चों के लिए न केवल बुनियादी साक्षरता बल्कि संख्यात्मकता हासिल करने के लिए निपुण भारत मिशन शुरू किया है. In the case of digital devices, the PME Vidya initiative has been expanded to provide educational content through television, radios, and mobile apps. Honorable Speaker, we are also supporting the distribution of tablets and smart devices to students who are lagging behind. महालया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्वालिटी एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया, परंतु ग्राउंड लेवल पे सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स और टीचर ट्रेनिंग में आज भी रोड लर्निंग सिस्टम ही प्रचलित है. क्या सरकार ने कोई टाइम और रोड मैप तय किया है जिससे नीति के विजन गोल्स को स्कूलों में वास्तविक रूप में लागू किया जा सके? Honorable Member, education reform is not a one-time event. It is a continuous and evolving process. राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक प्रशासनिक पत्र नहीं, बल्कि उभरते भारत के भविष्य का एक व्यापक मार्गदर्शन है. While challenges exist, this government is fully committed to addressing them with transparency, urgency, and accountability. So, honorable members, let us work together to ensure that every child in India receives the education they deserve. Thank you, Honorable Minister. The House has taken note of the issue and the response given. Let the government act with urgency and seriousness this matter deserves. Now we move on to the next submission. I will consider on these matters and will try to resolve all the issues. Madam. Yes, Anvesha Singh. Do you want to say something? Thank you, Speaker Madam. I rise to give notice regarding a serious breach of privilege committed by the Department of Water Resources. During the previous session, the Honorable Minister, while replying to a starred question on
Flood preparedness and mitigation in Punjab stated that all major canals in Punjab had been desilted and the dam safety audit was fully completed before the onset of monsoon. However, recent reports by Punjab State Disaster Management Authority and independent technical inspection have revealed that no such desilting was undertaken in several key stretches of Satluj and Beas canals, and the dam safety checks were either partial or incomplete. This amounts to a willful misleading of this House and suppression of critical facts concerning public safety, thereby constituting a serious breach of privilege of this House. I therefore request that the matter be referred to the Committee of Privileges for detailed examination and appropriate action against the authorities or officials responsible for presenting false information before the House. Honorable Member, have you given a notice of it earlier? You cannot play a string of surprises on me like this. Yes, madam. I have already given notice of it at 10:15 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now papers to be laid on the table of the House by the ministers. Honorable Minister of Home Affairs, please. Honorable Chairperson, respected judges, and my fellow youth leaders. Each monsoon, Punjab, the land once called India's greenery, draws again. Field of gold turn to field of grief, and families rebuild what the flood washed away. Not once, but every year after year. Let's accept it. These floods are not just nature's theory. They are man-made disasters. Unplanned urbanization, encroached riverbanks, silted canals and neglected dams. We built this crisis with our own hands. The Satluj and Beas aren't angry. They are choked by our apathy. Secretary to report message from the upper chamber of Youth Parliament. Yes, madam. I have to convey the following message received from the Secretary General of Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of rules of procedures and conducts of business of Upper House, I am directed to enclose a copy of Public Health Emergency Response Bill 2025 as passed by Upper House of Youth Parliament at its sitting held on 30 July 2025. Secretary to lay on the table a copy of Public Health Emergency Response Bill 2025 as passed by the Upper Chamber of Youth Parliament. Yes, madam. I lay on the table of the House a copy of Public Health Emergency Response Bill 2025 as passed by Upper House of Youth Parliament. Honorable members, today is a proud moment for this Youth Parliament. We deeply honored to welcome a distinguished delegation from the United Nations to our proceeding. The presence of our esteemed guest from the UN reflects the global recognition of youth engagement in democratic process and importance of nurturing young voices in policy and governance. On my own behalf and on behalf of honorable members of this House, I have great pleasure in extending our warm and heartiest welcome to Ghana Parliamentary Delegation. The honorable members are Mr. Adekorafo, Speaker of Ghanaian Parliamentary. The other honorable member who honored visit to India as our honored guest. The other honorable member is Miss Angela, Deputy Speaker of Ghanaian Parliamentary. They are now seated in a special box. We wish them a happy and comfortable stay in our country. Now let us take up the calling attention motion. Mr. Ayush Patel, please call the attention of the ministers. Honorable Speaker, Madam, through you, I wish to ask the Home Minister, what specific steps, Speaker, Madam, I ask, what specific steps is the government taking to prevent unplanned urbanization and encroachment along Punjab's river banks, which have directly contributed to recurring the floods in the state? Honorable Minister of Home Affairs, please. Yet, the spirit of Punjab stands tall. Farmers turn into rescuers and youth into volunteers, providing that resilience runs deeper than any flood water. But resilience is not enough. The action is. We need smart flood management,
real-time data system, and a true coordination between the state and the center. Let's shift from relief to resilience, because the flood of Punjab is not a regional tragedy. They are national warning. If we don't respect nature, I repeat, if we don't respect nature, the nature will stop respecting us. Ms. Astha, please. Honorable Speaker, Madam, I rise to call the attention of the House and the Honorable Minister of the Health to a deeply alarming issue, the rising number of zero-dose children in our country. As per the United Nations Children Fund and the World Health Organization report, India has still 1.6 million children who have not received a single vaccine dose. These children are extremely vulnerable to preventable diseases like polio, tuberculosis, measles and diphtheria. Most of these children belong to marginalized community, remote tribal regions, urban slums or conflicted affected areas. Honorable Speaker, this is not just a health crisis but a moral and development failure for our country. I ask Honorable Minister, what immediate action has been taken to identify and vaccinate these children? Health Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I thank the honorable member of the opposition for raising this important issue. Yes, the presence of zero-dose children is a concern that the government has taken very seriously. I would like to share the major steps our ministry has taken. Under Mission Indradhanush, especially intensified and tribal versions, we are targeting the unreached populations with door-to-door campaign. The UWIN portal has been introduced to digital register and track children's immunization status. We are using, I repeat, we are using One Village, One Health campaign model to spread awareness and counter vaccine myths. Collaboration with Anganwadi workers, Ashas, Panchayati Raj institution and faith leaders has helped us to reach challenging areas. The government is also working with UNICEF, WHO and civil society organizations to improve access, logistics and trust among parents. Honorable Speaker, every child's life is precious and our efforts will continue until every child receives the care they deserve, Thank you. Now, let us take up the legislative business. Honorable Minister of Water Resources to introduce the bill, please. Honorable Speaker, I rise to move for leave to introduce the bill titled the Clean Drinking Water for All Bill 2025, which aims to ensure universal access to safe and clean drinking water across for all the urban and rural households in India. Now, the question is that the Honorable Minister be granted leave to introduce the bill titled the Clean Drinking Water for All Bill 2025. All those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are in against will please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Leave is granted. Ma'am, I introduce the bill. Now, the House will take up the consideration of the Women's Equality and Participation Bill 2023. Honorable Minister of Law and Justice, please. अध्यक्ष महोदय, हम बराबरी की बात करते हैं लेकिन इस सदन की कुर्सियों पर बराबरी कहीं नजर नहीं आती। महोदय, इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखती हूँ कि महिला समानता एवं सहभागिता विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। इस विधेयक के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं में रोटेशन के आधार पर 15 वर्षों तक महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित रहेंगी। सभी राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी, जिनको 50% तक करने का पूरा
चलते भागीदारी 16 तक नहीं पहुंच पाया। अगर हम जून 2023 के अंतर संसदीय संघ की रैंकिंग को देखें तो भारत 180 देशों में 142वें स्थान पे आता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। लेकिन समय तथा सरकार के स्वरूप जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं कि अब यह मांग है कि महिलाओं को इस राजनीतिक स्तर पे भागीदारी के और असर दिया जाए ताकि पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यह आरक्षण केवल महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। Now I move Women's Equality and Participation Bill 2023 be taken into consideration. Motion moved. Ms. Anima, please. Honorable Speaker, I rise to support this bill. Women's equal participation and leadership in political and public life is essential if we are to achieve sustainable development goals by 2030. According to UN Women, 23 countries has reached around 40%. I repeat, around 40% participation. India must walk with time or else we risk to be remembered for our outdated and conservative standards. Ms. Avni, please. Honorable Speaker, Madam, India is the largest and one of the most resilient parliamentary democracies in the world, with a female population of 662.9 million. But at same time, India has high percentage of crime against women, low participation of women in workforce, low nutrition level and a skewed sex ratio. To address all these challenges, we need active participation of women. We need more women in decision making. So I support this bill. Mr. Aditya Raj, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। 1992 में महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिला था, लेकिन आप देखिए अधिकतर निकायों में महिलाएं रबर स्टैंप की तरह काम कर रही है। आरक्षण से महिलाओं की सांसद में से संख्या बढ़ेगी, उनकी शक्ति नहीं। सरकार को महिलाओं की राजनीतिक स्तर से हटकर उनकी समस्याओं पर कानून बनाना चाहिए। I do not support this bill. Ms. Richard, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि 1992 के कदम बहुत सफल रहे हैं। अब इस बात का यह प्रमाण है कि पंचायती नेताओं के रूप में महिलाओं ने सामाजिक वितकों को तोड़ा है। वे पुरुषों की तुलना में अधिक सुलभ है। उन्होंने शराब की पकड़ को नियंत्रित किया है, पीने के पानी जैसे सार्वजनिक वस्तु को पर्याप्त निवेश भी कराया है, साथ ही अन्य महिलाओं को खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में मदद भी की है। हाँ, हो सकता है यह जो कह रहे हैं या इनके क्षेत्र के हालात हो। Members, please maintain the decorum of the house. या शायद इनके पास आंकड़ों का अभाव है। आज स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार कम हुआ है और महिलाओं ने विकास के एजेंडे को बदल रखा है। महोदय, महिलाओं का विकास जमीनी स्तर पर तो नहीं बल्कि कागजी स्तर पर अधिक हुआ है। योजनाएं तो ऐसी बनी है कि सुनकर लगता है कि देश नारी के लिए स्वर्ग बन गया है, लेकिन हकीकत में कई जगह आज भी महिलाएं रसोई और रिपोर्ट दोनों में ही फंसी हुई है। कभी कभी तो लगता है कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण को PowerPoint प्रेजेंटेशन समझ लिया है। Please maintain the decorum of the house, Mr. Ayush. जी महोदय। इसी कारण कई राज्यों ने महिलाओं का आरक्षण स्थानीय निकायों में बढ़ाकर 50% कर दिया है और अब हमें इसे संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। Ms. Bhavna, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष की ओर से यह स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि यह विधेयक महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं ला पाएगा। यह विचार संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है। आरक्षण होने पर महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे समाज में उनकी स्थिति कमजोर भी हो सकती है। शायद इसलिए संविधान निर्माताओं ने महिला आरक्षण को संविधान में स्थान नहीं दिया। साथ ही संसद
महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर देगा, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। महिलाएं एक जाति समूह से भिन्न है, जिसका अर्थ है कि वे समरूप समुदाय में नहीं है। इसलिए जाति आधारित आरक्षण के लिए जो तर्क दिए जाते हैं वे महिलाओं के लिए नहीं दिए जा सकते। इससे शहरी महिलाएं तो संसद में बढ़ चढ़ कर आएंगी, परंतु गरीब पिछड़ी महिलाओं का क्या उन्हें मौका मिलेगा? Therefore, Honorable Speaker, I humbly urge that this bill must be refined, not to restrict women by reservation, but to empower them through real representation. Mr. Vikas, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, आजादी के सफर में अब तंगलियों का रुख मोड़ रही है। प्रतिबंध की दीवारों को हौसलों के हथौड़े से तोड़ रही है। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि महिला पुरुष को उच्च स्थिति या सामान्य भागीदारी की स्थिति में लेके आएंगे, परंतु ऐसा ना हुआ। यह विधेयक उन कम को जरूर पूरा करेगा। आज जहां महिला ज्यादा शिक्षित और सशक्त है, तो आरक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं संसद में लिंग भेद मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत लड़ी बने, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और साथ ही जब राजनीति में अधिक महिला होंगे तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लिंगायत भेदभाव और महिला के स्वास्थ्य जैसी लिंग संवेदनशील नीति को अधिक संवेदनशील और तत्काल तरीके से संबोधित किया जा सकेगा। आज समय क्या मांग है कि हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं बल्कि सशक्तिकरण दें, क्योंकि सुरक्षित वही होती है जो शक्तिशाली हो। माननीय अध्यक्ष महोदया, समाज तब आगे बढ़ता है जब देश की आधी जनता सिर्फ दर्शक ना बनी रहे बल्कि निर्णय लेने वाली बनी रहे। यह विधेयक भारत की ओर एक कदम है जहां बेटियां बोझ नहीं भविष्य है, जहां महिलाओं की भागीदारी विकल्प नहीं आवश्यकता है। Miss Abha, please. Honorable Speaker Madam, if we closely observe the gender gap index 2025, we rank 131st out of 148 countries. It is clear that we are not just poor in political empowerment, but we are also lagging behind in economic participation and educational attainment. Women in trust can't be isolated by other social economic strata. Therefore, Madam, even though I have no quarrel or basic idea behind it, but I can't support this bill. Miss Anshika, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि हमें चुनाव सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी दलों को पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना आंतरिक लोकतंत्र, ऐसे लोग आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिनके दादा ने की पार्टी बनाई, जिनके पिता इस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और तो और यही नहीं, आगे चल के उनका बेटा भी तैयार इस पार्टी के अध्यक्ष। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोग आंतरिक लोकतंत्र बात ना करें तो ही बेहतर होगा। Honorable members, please maintain the decorum of the house. Mr. Yuvraj, don't interrupt the session. Kindly sit down at your place, otherwise you will be out of the debate. Yes, madam. माननीय सदस्य के द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन न करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आरक्षण का दुरुपयोग भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि महिला राजनीति में न आए, लेकिन राजनीति में आने का मापदंड योग्यता होनी चाहिए, न कि आरक्षण। मैं सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहूंगी कि क्या हम महिलाओं की योग्यता पर शक कर रहे हैं जो उन्हें सीटें आरक्षित करके दे? यह बिल ग्रामीण महिलाओं, हरिजनों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कुछ नहीं करता। मुझे इस बिल में ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को फायदा दे। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन नहीं करूंगी। Mr. Aravind, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, ये सभी तर्क और सुझाव कई वर्षों से दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी दल इन पर अमल नहीं कर रहा है। इसीलिए हम आरक्षण देकर ही सभी दलों की एक राय बना सकते हैं, वरना यह मुद्दा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई एक दल कभी भी महिलाओं को आरक्षण नहीं देगा और
और जहाँ तक इनके चुनाव सुधारों की बात, तो हमने इनको समाहित किया। धीरे धीरे सभी दल मिलकर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना जरूर करेंगे। मिस गरिमा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर सदन समाज को महिला और पुरुष में बांट कर देखता है तो फिर द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों, डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी हर क्षेत्र से एक महिला और एक पुरुष के चुनाव का प्रावधान कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर यह संकट पुरुषों पर भी आ सकता है। मिस श्रुतिश्री प्लीज। Honorable Speaker Madam, women have already proved themselves they are nurturing our civilization. I would like to quote the words of Sandra Seeley. Women have always had to be creative about making limited resources work to sustain themselves and their families. They understand what it means to make hard decisions and to just get on with it. That is why it is imperative for women not just to be ones dusting off the table, but crafting its legs for our world to stand on. So I support this bill. स्पीकर मैडम, जब भारत में महिलाओं की आबादी 50% है, तो 50% रिजर्वेशन क्यों ना हो विधानसभा और संसद में? आखिर क्यों केवल महिलाएं सिर्फ 16% सीटों तक ही सीमित है? Speaker Madam, once Dr. APJ Abdul Kalam has said that if women will get into this assembly, they would definitely bring some orders, and on that day we can hope to see some development politics instead of just political politics. The political parties, ma'am, they do not even prefer to give tickets to women candidates. In fact, the voting pattern says that women contribute more than 50% in voting, which means they are being used as voting banks instead of representatives. Hence, I am in favor of this bill to be introduced in the youth parliament because it increases gender equality and women political empowerment. It leads to decriminalization of the politics, and the last but definitely not the least, it gives the governance a strong feminist voice. To end with, I just want to say that a strong woman stands up for herself, a strong woman stands up for herself, but a stronger woman stands up for everyone else. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को और हमारे विपक्ष के नेताओं को यह बताना चाहूंगी कि आरक्षण से महिलाओं की स्थिति कमजोर होगी या दोयम दर्जे की होगी या इनके ही दिए हुए भ्रामक प्रचार है। हाँ महोदया, यह सच में हैरानी की बात है कि जो लोग पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का डंका बजाते आए हैं, वही लोग, हाँ महोदया, वही लोग अपने साथ बैठी मजबूत और सक्षम महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप, हाँ महोदया, आप महिलाओं को सदन में आने से रोकते हैं तो आप उसी सदन को कमजोर कर रहे हैं जिसे आप खुद बचाने की बात करते हैं। महोदया, स्वीडन जैसे छोटे से देश भी अगर महिला सहभागिता के कारण आगे बढ़ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं बढ़ सकता? भारत मैत्री, अपाला, घोषणा जैसी विदुषी महिलाओं का देश है और यह अधिनियम उसी प्राचीन को गौरव करेगा। जहां तक बात रही महिलाओं के आर्थिक शैक्षणिक सुधारों की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला पुलिस संघ, महिला उद्यमिता जैसी कई योजनाएं हैं। इसलिए हमने राजनीतिक समानता की बात की है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत में महिलाओं के पास पहले से बहुत से सामाजिक दायित्व हैं। अब अगर हम उन्हें राजनीति में लाएंगे तो उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। मैं अपने विरोध के कारण बताना चाहूंगी। पहली बात, बिल के समर्थन में सदस्यों ने कहा कि गिव रिजर्वेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ मैं बस स्पष्ट कर दूं कि राजनीति के अलावा भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं ने बिना किसी आरक्षण के सफलता प्राप्त की है। दूसरी बात, महोदया, आप भारत में ग्रामीण इलाकों का सर्वेक्षण कीजिए, वहाँ महिलाओं को राजनीति में रुचि ही नहीं है। और तीसरी बात, महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने से उच्च वर्ग की महिलाओं का तो प्रवेश होगा, परंतु कमजोर और गरीब वर्ग की महिलाओं का नहीं। इससे परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और ऐसी राजनीतिक सहभागिता से हमारे देश का भाग्य नहीं बदल सकता। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करूंगी। Prime Minister, please. Respected Madam, I'm glad this bill sparked a meaningful discussion in the House.
The bill is not driven by any political ideology, Ahmed. Women have proven their skills in many fields, be it civil services, armed forces or space missions. And we believe women will contribute to the politics with the same spirit. We are not waiting for you to pass the bill. We are creating institutional support, including in the army. Well, I urge my colleagues to at least have some shame and set aside their conservative views, or else step down from your position. Please maintain the decorum of the House members. Well, I should remind you, dear colleagues, equality isn't up for a debate. I repeat, equality isn't up for a debate. Honorable Minister of Law and Justice, please. Honorable Speaker, Madam, for years this House had been hidden behind committees, reports and future considerations. This endless delay is nothing but organized obstruction. The country is watching and the message is clear. Those who delay equality, they do so because they benefit from the inequality. Honorable Madam, coming to the main point, I am thankful to those members who have supported this bill, and I am also grateful to those members who have laid their constructive criticism to this. This will improve as a fundamental shift in our society, and I hope we have answered most of the points raised by the members in a course of speech. At the end, I would like to quote Baba Saheb Ambedkar. The progress of a community can be measured by the progress of a degree which women have achieved, and I request the House to pass the bill. Now the question is that the bill to provide political equality to women and their matters connected therewith to be taken into consideration. All those who are in favor will please say aye. Those who are in against will please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Now the question is that clause 2 to 10 stand part of the bill. There is an amendment in clause 2 by Ms. Garima. Are you moving it? No, madam. In view of the reply given by the minister, I am not pressing my amendment. Now, Honorable Minister of Law and Justice, please. Respected madam, I move the bill be passed. Now, motion moved that the bill is passed. All those who are in favor will please say aye. Those who are in against will please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Motion is adopted. Now the House will adjourn to meet again tomorrow.